अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हमज़ा और आप आज ऑनेस्ट ओपिनियंस की इस वीडियो में हाँ, खुशामदीद कहता हूँ मैं आपको। आज हम डिस्कस करेंगे पीएसएल के कुछ गुज़िश्ता मैचेस की। और मैं जानता हूँ कि कुछ वीडियोस नहीं आई और बिकॉज मैं थोड़ा बीमार था, तो जिस वजह से मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना पाया सच, और मुझे टाइम नहीं मिल सका कुछ कामों की वजह से। आज हम ज़रूर बात करेंगे कुछ मैचेस पे। तो सबसे पहले आज बात करते हैं जो है इस टाइम जो करंट सिनेरियो चल रहा है आज के मैच पे। उसके बाद हम जो संडे को मैच हुआ वो अ, जो सैटरडे को मैच हुआ, जो फ्राइडे को मैच हुआ, उस पर डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कल रात को मैच हुआ, सॉरी, जो हमारा मैच हुआ लाहौर का विद मुल्तान सुल्तान। बड़ा हाइप था कि टूर्नामेंट की दो सबसे अच्छी टीमें जो है एक दूसरे के अगेंस्ट है, और देखा जाए कि कौन सी टीम जीतती है और कौन सी नहीं जीतती। तो आई थिंक लाहौर ने जो है क्वाइट क्लियरली टीम्स को बता दिया कि व्हाट लाहौर कलंदर इज ऑल अबाउट, और व्हाट इट टेक्स टू बी अ ग्रेट टीम इज द यूनिटी बिटवीन देम। और आज हमने लाहौर की जो टीम है उसकी टीम में वो, सॉरी आज नहीं, उस दिन हमने देखा कि लाहौर की टीम जो है वो बहुत यूनिटी के साथ खेल रही थी, और दे आर लुकिंग लाइक अ फैमिली एंड दे आर एंजॉइंग द क्रिकेट। सो ये मैटर बहुत करता है जब आप क्रिकेट एंजॉय करना शुरू हो जाते हैं अपनी, तो देन सडनली आपकी जो है बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है और आप देन जो है परफॉर्म बेहतर करना शुरू कर देते हो, एंड देन आप जो है वो बगैर किसी डर के खेल रहे हो। लाहौर के अंदर जो मुल्तान सुल्तान का मैच था, लाहौर ने 180 फॉर 9 रन 180 रन किए 9 विकेट के नुकसान पे 20 ओवरों में। एंड देन उसके बाद लाहौर ने जो है जो काम दिखाना था वो दिखाया, और दे वर ब्रिलियंट विद द बॉलिंग एंड विद द फील्डिंग एंड विद द बैट। आप क्या है किसी की तारीफ करना चाहें, अब्दुल्ला शफीक बेहतर फॉर्म में है, सैम बिलिंग्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सैम बिलिंग्स ने इस मैच में 50 भी की थी, अब्दुल्ला ने भी 50 किया। लाहौर की टीम जो है बड़ी अच्छी चल रही है, सिकंदर रजा की भी परफॉर्मेंस अच्छी है, डेविड भी साहब अगर बॉल बैटिंग में नहीं कर रहे तो बॉलिंग में जरूर कर रहे हैं। तो पूरी टीम जो है एक टीम की कंबाइन एफर्ट थी, और राशिद खान जो है वो सबसे बड़ा प्लस फैक्टर है कि उन्होंने आके बैटिंग में भी थोड़ा बहुत स्कोर किया, देन उसके बाद उन्होंने बॉलिंग में उन्होंने एक जगह पे ऐसी स्पेल की जहाँ पे जो है उनसे कंटेनमेंट रिक्वायरमेंट थी लाहौर की, और उन्होंने बहुत अच्छी वो की। एंड इसी तरह से मुल्तान सुल्तान जो है अपना जो मैच है वो 21 रन से हार गया लाहौर से। इस जीत से जो है लाहौर के अंदर खैर टेबल पे तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, बट इट सॉलिडिफाइज द लाहौर टॉप एट द टेबल पोजीशन, द टॉप एट द टॉप। और इसमें हम यही कहेंगे कि लाहौर जिस तरह से खेल रही है, लाहौर इज डेफिनेटली अ टीम टू बीट। और जिस तरह पिछले साल मुल्तान सुल्तान खेल रही थी, इस साल लाहौर वो एक टीम है जो हराई नहीं जा रही है। अब हम बात करें अगर इस पे हम क्या कह सकते हैं इस पे, तो आई थिंक मुल्तान की भी हमने बहुत डिस्कस किया और लाहौर पे भी हमने बहुत डिस्कस किया। हमारे पास कुछ ऐसा कोई नया एक्सप्लेन करने को नहीं है जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में ना किया हो। और दे आर अ गुड टीम, एंड एज अ सपोर्टर ऑफ लाहौर के अंदर मैं चाहूँगा कि हम जो है ये टूर्नामेंट जीते दोबारा से, और आई नो हमारी कैपेबिलिटी है। और बस इस मैच से रिलेटेड हम इतनी बात करेंगे कि देयर इज नथिंग मच मोर टू टॉक अबाउट राइट नाउ, बिकॉज लाहौर के अंदर इज प्लेइंग सम फ्लॉलेस क्रिकेट। और कुछ टीमें भी, मुल्तान ने भी कुछ गलतियां की, पावर प्ले बहुत स्लो खेला उन्होंने, एंड उसके बाद तो लाहौर किसी को खेलने देता ही नहीं है। सो ऑल इन ऑल आई विल से दैट इट वाज अ बिट ऑफ मिक्स में। ये लाहौर को जो है जो पॉइंट ऑफ कंसर्न होगा वो हुसैन तलत है कि ना वो बैटिंग में कुछ कर रहे हैं ना वो बॉलिंग में कुछ कर रहे हैं। वो बस एक टीम पे अजाब है मेरे हिसाब से। तो
और मुझे पर्सनली वो बंदा पसंद नहीं है। यस, प्लेयर अच्छा है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। सो मेरे हिसाब से लाहौर को अब चाहिए कि लाहौर जो है वो सल्तनत को निकाले और किसी ऐसे बैट्समैन को लेके आए जो थोड़ा तेज चलने वाला हो। प्राइम एग्जांपल, आप क्वालिफाई कर चुके हो तो आप चुप करके जो है चांस दो शवेज इरफान को, इसको बिठाओ। कर तो ये भी कुछ नहीं रहा, शवेज इरफान को चलो एक्सपोजर तो मिल जाएगा ना। सो इसमें हमारे लिए यही है कि हमको चाहिए लाहौर को कि हम शवेज इरफान को खिलाएं। तो देन कमिंग ऑन द नेक्स्ट मैच जो कि संडे का था, यानी कि कल का। और कल का मैच बड़ा अच्छा हुआ और वो था कोयटा और वो था मैच कोयटा और उसके दरमियान इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। कोयटा ने स्टार्ट किया, थोड़ा स्लो थे, आउट जल्दी हुए, 17 पे 4 आउट हो गए थे। एंड वी वर लाइक व्हाट कैन यू से, there were no there were no words to describe the feelings at that moment, because there was no kind of intention being shown by any player of the Quetta Gladiator team itself. But it was a kind of very difficult phase of to play at that very point of time, because I was not able to understand what the hell they are trying to do, and they were not even scoring runs. Neither they were trying to rotate, or they were trying to play some shots. They were just the ball was just running, and they were just playing dots and dots, and there was no real such intention. And they were 17 for 4, completely clueless. And then comes Najibullah Zadran and Mohammad Nawaz, which I very much like about. और इसमें यही था कि बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट में, और उसके बाद जो है जहां पे 4 आउट हुए जहां पे वो स्पिनर आए फील्ड थोड़ा सा इजी हुए, और वहां पे मोहम्मद जो है नवाज ने और नजीबुल्ला ने थोड़ा अग्रेसिव खेला शुरू किया, जहां से स्कोर चलने लगा। एंड देन उसके बाद जो है मोहम्मद नवाज जो है वो एक एंड सिक्योर करने लग गए, स्लो खेल रहे थे। और नजीबुल्ला सादरान जो है वो तेज खेल रहे थे, विच वॉज अ वेरी गुड टैक्टिक इन माई माइंड, बिकॉज आपको चांस देना पड़ता है। समटाइम्स आप आउट होते हो, समटाइम नहीं होते आप। समटाइम वही चौड़ आप मारो तो वो कैच छोड़ के आप किसी तरह से वो चौका या छिक्का हो जाता है, और अगर किसी से नहीं होना तो वो आउटस्टैंडिंग छिक्का भी जो है वो कोई कैच पकड़ लेता है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर लक कि आप क्या है क्या नहीं है, बट आपको खेलना चाहिए। और इसी तरह से नजीबुल्ला सादरान उन्होंने बहुत अच्छी खेली। तो 16वें ओवर तक जो है ना 160 121 थे। एंड देन उमर अकमल की एंट्री होती है, और व्हाट आई थिंक ही प्लेड, और उन्होंने अपने जो टैलेंट की जो ग्लिम्स है वो शो की, दैट ही इज सो मच टैलेंटेड एंड ही वेस्टेड हिज हिमसेल्फ। और बस सोशल मीडिया के चक्कर में जो है अपने आप को जो है अपनी गेम को इज्जत नहीं दी उस बंदे ने। और पाकिस्तान लॉस्ट अ ग्रेट स्टार बिकॉज he was something else. The way he played the international bowlers was something really which I miss even at this moment. But कहने की बात यह है कि बहुत अच्छी बैटिंग की उम्र ने, और 14 बॉलों पर 43 रन स्कोर किए, जिसने कोयटा को जो है एक अलग ही मोमेंटम दिया। देन कम्स इस्लामाबाद की बैटिंग। इस्लामाबाद की बैटिंग तो आपको सबको पता कि छोटी नहीं है। देन इस्लामाबाद का स्टार्ट बहुत अच्छा था, पावर प्ले में 70 अबव रन थे, 80 तक रन हो गए थे विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। सो दे वर क्रूजिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट देन कम्स जहां पे शादाब खान आउट हुए, उसी टाइम पे कॉलन मुनरो आउट हो गए, जिन्होंने 63 रन की बहुत बेहतरीन इनिंग खेली। और जैसे ही वो आउट हुए देन दे वर सम फ्लरी ऑफ विकेट्स। और आप इसको कह सकते हैं कि जैसे ही वो आउट हुए देन मुबस्सिर आउट हुए, एंड देन आसिफ अली आउट हुए, मिस्टर रिमेंबर द नेम गुड फॉर नथिंग आते ही आउट हो गए। एंड देन आजम खान आए और फहीम अशरफ थे। दोनों ने बड़ा समझदारी से बैटिंग की, क्योंकि वहां पे ऐसा रियल एग्रेशन की कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज देर वॉज टाइम। और आप अपना जो है
सुकून से 10 ओवर में आपको 70-80 रन चाहिए, तो आप एज ए बैटिंग टीम अपने आप को बैक करते हो, एंड देन उसके बाद जो है वो थोड़ा स्लो खेलते रहे, पेस करते रहे, बट दे डीप जस्ट दे took the game very deep and they were trying their very best to solidify their innings and their run chase, and they were very successful in that part because the both were playing very good, and they never fell short. Then never they were never looking like that they won't be able to achieve this target, and the both were playing very well with presence of sense, and they were rather than hitting some rash shots, they were just trying to squeeze some runs, which was good for them and for their team, and it worked in the benefit for their team. And then after that, Azam Khan exploded, and then he scored really fastly, and he got out on the score of 35 on 25 balls, not on not an Azam Khan's innings like, but it was a good inning because the team required him to stay at that moment, and he fulfilled the desired requirement of the team. Rather he just ignored his natural style, but adapted the situation very well. So which I also like, and I like to praise Fahim Ashraf as well, because the way he adapted himself, and he adapted to the situation, and his game was very good, and the point must be given to these both players, because if they wouldn't have survived the initial onslaught at that time and the pressure which was being put by the Quetta Gladiators itself, then I think it would have been very difficult for Islamabad to make through. And then comes the point that there are some kind of issues that Quetta Gladiators no need to need to be thinking that what the hell they are trying to achieve, and I just don't know that what the hell is the role of Odin Smith in the team. Neither he is doing well with the bat, nor he is doing any good with the ball. Then what the hell is that when you have so much resources like Pretorius, Chris Morris, and then likes of Hafiz, and then what the hell is he doing in the team? Because of he's just wasting an one overseas slot. You could have played a one very good player. So I don't think so. What the hell they are trying to think, and they showed that Odion Smith was a weakling again, and then when he was defending it like 9 runs in last over, the way he bowled the last 3 balls of the over, it just clarified that he is just a waste of time and a waste of money, and he needs to rectify his game as soon as possible. So अब हम आते हैं जो हमारी जो नेक्स्ट जो आज का मैच था, वो था कराची किंग्स कोटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान. इसमें क्या कहें, दोनों बॉटम बॉटम की टॉपर्स हैं. सो कोटा ने टॉस जीता, बॉलिंग की. स्टार्ट में कराची के जल्दी आउट हुए. कराची इनिशियली लॉस्ट द प्लॉट, और कराची ने जो है बड़ी अच्छी बैटिंग की. उसके बाद जब उनके यहाँ पे 3-4 आउट इकट्ठे हुए, क्योंकि 80 रन पे 4 आउट थे उनके कराची किंग्स के, एंड देन सडनली जो है इमाद वसीम और एडम रोजन ने अच्छा खेला, एंड द स्कोर इवेंचुअली पाइल्ड अप टू 165 फॉर 6, वो जो कि अच्छा था. और मुझे लगा चलो यार ये तो हो सकता है डिफरेंट, द कैन डिफरेंट. बट जैसे ही कोयटा बैटिंग पे ही मुश्किल थी, और बहुत मुश्किल हुआ कोयटा के लिए. और कोयटा के बारे में हम क्या कहेंगे कि कोयटा भी एक, जितनी मैं इन पे बात करना चाहूँगा, मैं कोयटा की समझ नहीं आती कि कोयटा क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है. कोयटा की मैनेजमेंट को चेंज होना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर टीम. और इसमें यही है कि अब जो सिचुएशन है वो यही है कि कोयटा को अपने सारे मैच जीतने हैं, और
और कराची को जो है वो अपना किसी तरह से मैनेज करना है कि किस तरह से वो इस चीज़ को सॉल्व करे अपने इशू को, कि 2 साल हो गए हैं दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। सो आते हैं आज की मैच के एनालिसिस पे। तो जैसे ही ये स्कोर हुआ और एक फेज था जहां पे लग रहा था कि कराची नहीं हारेगी, और 4 ओवरों में 68 रह गया वो था, और देवर लाइक कि यार हाँ यार अब तो कराची जीत जीत गया और कोयटा तो बाहर हो गई है। Then comes another twist. Martin Guptill, the batsman, the great batsman, and he hit James Fuller out of the park. Right, I think he conceded approximately 25 to 26 runs in that his particular over, which changed the tide of the match towards the Quetta Gladiators. And from there, the kind of momentum they got from that particular over, they never looked back from here, and they just went with the flow and eventually ended up winning the match by 4 wickets with 1 ball remaining in the match. And with the ending of this match, the situation arises that Karachi Kings are almost eliminated from the competition itself, and their only hope is that Peshawar Jazmi loses his all 4 matches to keep them intact in the competition, whereas the chances of Quetta has got up a slight higher because they have one more match left. They have one more match left than the Karachi Kings itself, because Karachi has played 9 matches, won 2 and lost 7. Whereas from the point of view of Quetta Gladiators, they still have 2 games, and if they manage to come out victorious from these particular 2 matches, you don't know uh, what will happen, because I think if they want to qualify, they will still have to do it by quite a big margin, because I don't see them qualifying on the verge of net 100, because their net 100 is minus 1.457, which is approximately to be unbelievable. It cannot be achieved, but keeping in mind that if Peshawar loses its all matches and somehow Quetta Gladiators win their 2 matches, so there won't be any question regarding to the qualifying scenario with the respect to net 100, because they will be having the greatest points ranking. Then the Peshawar Zalmi itself, and will become the 4th team to eventually qualify from the round robin stage itself. But the chances of Quetta Gladiators and Karachi Kings especially are bleak. Karachi now have to win the last match against Lahore, with which is going to happen on this Sunday. They will have to win that match in order to be in the tournament, or you can say that to have any kind of chance to even think about that they can still qualify. But that's not the kind of option that they won't be resist. And we today saw the interview of Imad Wasim, and he was completely in that way that he has left the hope of that we can even qualify, and he was like that we will come back stronger in the next season. So he himself has acclaimed that they are not going to be qualifying, which I find it a bit odd. But from his perspective, he has tried very hard. I'm not a Wasim supporter, but I do feel bad for Imad Wasim, because he has worked very hard on his batting and his bowling. He has pulled his heart out, performed so brilliantly with the bat and the ball. But to be very honest with himself and with the Karachi franchise itself, the other players need to contribute more as well. It is not an individual sport. It is a team sport. The 11 players are playing. You have to be able to support the other player that is performing. And I'm sorry to say, I feel very bad for Imad Wasim that he tried his 200%, but his team disappointed him, and they never got that kind of platform, and they never accelerated in any kind of phase. And the moral of the story is, right now, as the tournament is progressing,
the two teams, Lahore Qalandars and Islamabad, have qualified because they are above that level of, you can say that, the max point, because the situation arises that uh, the last team that even will be qualifying will be of uh, 8 points. If any team achieves 8 points, they can easily qualify, because Karachi and Quetta Gladiators can only maximum reach to point eights. And today, after the loss, Karachi cannot even qualify at 8, because they will be only, if they win their last match, they will only be able to reach till 6. So the situation is that for me, Karachi is almost out and down and out. And I still hope Quetta Gladiators have any miracle, because the way they won this match today, they should motivate their team, because they have that kind of skills. But they need to prioritize themselves and put a better team on the paper and the better team on the pitch, because I am not understanding that what kind of tactics they are using, and it is not a good kind of situation for Crota Gladiators. So इस वीडियो के लिए हमारी इतना ही. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.